हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय और यहाँ पे हम बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये बायोलॉजी ल्यूसेंट बायोलॉजी है। ल्यूसेंट बायोलॉजी में हम सारा टॉपिक कवर करेंगे ताकि उसको आसानी से मेमोराइज किया जा सके। हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे हम बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब है जो लिविंग बींग्स को डील करती है उसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। बायो मतलब लाइफ एंड लॉगॉस मतलब स्टडी। लेमार्क और त्रिवेनस ने 1801 में ये टर्म दिए थे। एंड बोटेनी स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट, थियोफ्रेटस इज नोन एज द फादर ऑफ बोटेनी। और जियोलॉजी की बात करें तो अरिस्टोटल को फादर ऑफ, यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जियोलॉजी एज वेल एज बायोलॉजी। तो अरिस्टोटल, अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जियोलॉजी और बायोलॉजी बोलेंगे। स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लानट, थियोफ्रेटस इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बोटेनी। अब इम्पोर्टेंट टर्म इसके अंदर कौन कौन से हैं? सबसे एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब कहता है इंटरनल स्ट्रक्चर जो ऑर्गन्स के होते हैं ना, उनको हम स्टडी करते हैं। जैसे हार्ट है, हार्ट को कट करके देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जो हम एनसीईआरटी में पिक्चर्स देखते हैं एक टाइप से, उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। एग्रोलॉजी, एग्रो मतलब सॉइल एंड लॉजी मतलब स्टडी। साइंस सॉइल की जो स्टडी होती है उसे एग्रोलॉजी। एग्रोनॉमी, नॉमी मतलब मैनेजमेंट। एग्रो मतलब सॉइल, सॉइल का मैनेजमेंट होएगा उसे एग्रोनॉमी बोलेंगे। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी में हम घास की स्टडी करते हैं, एग्रोस्टोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रो मतलब जॉइंट और लॉजी मतलब स्टडी, तो जॉइंट्स की स्टडी। एपिकल्चर, एपिकल्चर बी से रिलेटेड होता है, हनी बी। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ द पास्ट प्रेजेंट ह्यूमन। ह्यूमैनिटी की जो हम स्टडी करते हैं उसे हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। एंथोलॉजी, एंथो मतलब फ्लावर, और फ्लावर्स की जो स्टडी उसको हम बोलेंगे एंथोलॉजी। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन। एंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी। ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, बोलते हैं ब्रायोलॉजी। बायोमेट्रिक्स, स्टैटिक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोमेट्रिक्स, स्टैटिकल स्टडी, जब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की स्टैटिकल स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बायोमेट्रिक्स। अब आते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होता है प्रोडक्शन एंड द डिज़ाइन ऑफ द स्पेयर पार्ट ऑफ ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट इन मैन, आर्टिफिशियल लिम्ब। बाद बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर लेवल पे हम बायोलॉजी को जब स्टडी करते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी आता है। बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। साइटोलॉजी, इसके अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं, सी फॉर सेल, सी फॉर साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। क्रायोबायोलॉजी, क्रायोलॉजी का मतलब होता है बिल्कुल लो टेम्परेचर। क्रायो का मतलब क्रायो इंजन होता है ना, जो बिल्कुल लो टेम्परेचर पे काम करे वो क्रायो इंजन। और जो बिल्कुल लो टेम्परेचर पे स्टडी की जाती है, लो टेम्परेचर का एक ऑर्गेनिज्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसे बोलते हैं हम क्रायोबायोलॉजी। क्लोन, एक जैसे आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जेनेटिकली आइडेंटिकल जब हम किसी चीज़ के बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्लोन। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट को बोलेंगे हम कार्डियोलॉजी। डेमोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को बोलेंगे डेमोग्राफी। डिफ्यूजन, रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, आयन और गैसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब बात करते हैं डर्माटोलॉजी। व्हाट इज डर्माटोलॉजी? स्किन की हम जब स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं हम डर्माटोलॉजी। और डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ट्री के अंदर जो रिंग होते हैं ना, उससे हम उसकी एज के बारे में पता लगा सकते हैं, और जैसे हमें उसके एज के बारे में पता लगता है तो उसे हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इकोलॉजी, लिविंग और उनके एनवायरनमेंट के अंदर क्या रिलेशन है, लिविंग बींग्स एंड देयर एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, उसे इकोलॉजी। अब आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब न्यू स्पीसीज कैसे फॉर्म हुई, उसमें लाइफ कैसे आई, उसके अंदर वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायो का मतलब होता है भ्रूण, यानी जब जाइगोट बनता है ना, जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, कि एक एग का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उसके अंदर जो एग के फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेकंड प्रोसेस होती है ना, वो होता है जाइगोट। जाइगोट के बाद एक एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो के बाद फिर एक चाइल्ड बनता है। तो एम्ब्रायोलॉजी की फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एंड एम्ब्रायो, इसमें तीनों की स्टडी होती है। यूजेनिक्स, वो सारे फैक्टर जो कि इम्प्रूवमेंट, ह्यूमन रेस की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे बोलते हैं यूजेनिक्स। यूथेनिक्स, यूथेनिक्स इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इन्वायरमेंटल, इसमें अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर को
कंसिडर करते हैं कि कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग को इम्प्रूवमेंट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। यूथेनिक्स, यूफेनिक्स क्या होता है? यूफेनिक्स होता है ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्ट इन हेरिडिटी, डिफेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्ट इन हेरिडिटी थ्रू जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। यूफेनिक्स, इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके जो हेरिडिटी के अंदर प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करते हैं। ethnology, study of science dealing with the different races of humans। ethnology, etho मतलब behavior, so we are going to study the behavior of animals in their natural surrounding। Etology is the study of causative agent of diseases। entomology, entomology means insect, study of insect, is really very easy and has been asked in various question papers multiple times। Exobiology, study of the possibility of life in space। Exo means outside. From where? From outside the earth. So outside the earth, exobiology, स्पेस की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मीन्स फ्लावर, पीछे भी एक आया था, कौन सा था वो? स्टडी ऑफ फ्लावर से रिलेटेड। तो फ्लोरिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट फॉर फ्लावर्स। अब फूड टेक्नोलॉजी इज स्पेशल दैट हाउ वी विल प्रोसेस द फूड, हाउ वी विल प्रिजर्व द फूड, हाउ वी विल स्टोर इट एंड हाउ वी विल ट्रांसपोर्ट। Now we are talking about the forensic science। Forensic science, it is the science for the application of the various factor and evidence to identify the cause and the person involved in the criminal act। When you are going to conduct any crime, you will left some evidence like hairs, जो कि हम genetically identify कर सकते हैं, ठीक है। उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जहाँ पे भी हम प्रोसेस करते हैं वो होती है हमारी फोरेंसिक साइंस। ब्लड सैंपल हो गए, सीमन्स हो गया, या हमारे हेयर्स हो गए, इस तरह का अगर हमें कुछ भी बॉडी से रिलेटेड मिलता है जिसको हम लैब के अंदर जाके, फोरेंसिक लैब के अंदर जाकर के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फोरेंसिक साइंस। नाउ देयर इज फिशरी। फिशरी के अंदर आते हैं कैचिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग, फिश से रिलेटेड होता है फिशरी। इसके अंदर कैचिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग एंड मार्केटिंग एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। फॉरेस्ट्री, जब हम फॉरेस्ट का डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट करते हैं, व्हेन वी आर मैनेजिंग एंड डेवलपिंग द फॉरेस्ट, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट्री। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। So every statement, every word is really very important, and the word which is highlighted, for example incomplete oxidation, this word has to be remembered by you। मैं उनको आपको रटा दूंगा, but you should know incomplete oxidation that occur in microbes and other cells in the absence of oxygen। Incomplete oxidation क्यों होगा? Because there is a lack of oxygen or absence of oxygen, due to which there is a formation of ethyl alcohol। Now we are talking about the genetics, study of variation and transmission of hereditary character from parents to their young ones। Genetics, study of variation and the transmission of hereditary character from parent to their young one। Growth, permanent increase in weight, volume and size of an organism, this is known as a growth। Genetical engineering, it is nothing but the manipulation of the gene in order to improve the organism। Gynecology, study of female reproductive organs। Gynecology, study of female reproductive organ। Gerontology, study of aging is known as the gerontology। And gastroenterology, study of alimentary canal and stomach and intestine related disorders। Gastroenterology, study of alimentary canal or stomach and intestinal related disorders। Hypertonic, when two solutions have different solute concentration, the solution which have higher concentration is called hypertonic। Hypertonic means the solution which has higher concentration, जिसकी ज़्यादा होगी उसको hypertonic बोलेंगे, जिसकी concentration कम होगी। When you are making a solution, in solution you have solute or solvent। When a particle has a higher concentration, that is hypertonic, and when a component has a lower concentration, that is hypotonic। Homothermic animal who have the constant body temperature are called the homeothermic and or the warm blooded। Now we are talking about histology। Histology is the study of tissue organizing and their internal structure with the help of microscope। Hygiene, when we are talking about the health, that is hygiene। Hydroponics, growing plant without soil। Hydro means water, when we are growing the plant without the soil in the nutrient rich water, that is called hydroponics।
Hydro means water, ponics means growing of plant. When we are growing the plant in the nutrient rich water, that is called hydroponics, and we don't use the soil in this case. Ecology, study of interliving and their environment, the same page is here. एकिथोलॉजी, जब हम फिशिश की स्टडी बोलते करते हैं तो ये क्वेश्चन में आ चुका है. एकिथोलॉजी. इमेटोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? कैलोलॉजी. कैलोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. मेटाजोन्स, मेटाजोन्स हैं ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल आर कॉल्ड मेटाजोन्स. मोनारिक्स, प्लांट विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर. मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज नोन एज अ मॉर्फोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ को जब हम स्टडी करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज नॉट नोन एज अ माइक्रोबायोलॉजी. Molecular biology, study of the molecular found in the body of the living organism. Molecular biology. Medicine, study of the treating disease by drug. What is the main study of disease? Disease को जब हम drugs के साथ treat करते हैं उसे हम बोलते हैं medicine. Mammography, mammography means the branch of science which deal with the test for breast cancer. Mycology, mycology, when we are going to study the fungi, it is known as the mycobiology or mycology. Mycology, when we are going to study the ant, myrmecology. Mixed farming, when animal and agriculture are practiced, means the farming and animal husbandry are practiced together with each other, so that the one support the other, is known as the mixed farming. Now we are talking about the nutrient. Nutrient are the chemical substance that has been taken as a food which is necessary for the various function like growth, health, reproduction, etc. Nanotechnology, when we are going to deal anything with the nano, means 10 raised to power 9 meter, यानी 0.000001, मतलब no this after decimal you have to point 9 zeros, then you are going to deal at the nanotechnology. Our hair length is come under nanometer. We जो our hairs होते हैं हमारे, अगर उनकी diameter को measure करें, that come under the nanotechnology. Neurology, study of neural nervous system. When we are going to do the study of the nervous system, it is called the neurology. Now neonatology, when we are going to study the newborn, study that how the newborn baby should be treated, what are the treatment, what are the medicine. So there is a different concept with the newborn baby as compared to the adult or the children, because their immunity system, everything is different as compared to the later stage of the human being. So this is a special class of study which is called the neonatology. Nephrology, nephro we know is related to kidney, so study of kidney is known as the nephrology. Osmosis, movement of water from the lower concentration to the higher concentration through a semi-permeable membrane. There is a semi-permeable membrane, higher concentration से lower concentration की तरफ movement होती है, that is known as the osmosis. And हमारे जो RO है, reverse osmosis, we use RO at our home for cleaning our drinking water. So reverse osmosis, now what will happen in the reverse osmosis? Water content will flow from lower concentration to the higher concentration. Reason, perhaps I have to check it once, but इसके अंदर लिखा हुआ है कि हायर से लोअर की तरफ जाता है ना osmosis, but in actually it should be lower to higher osmosis, and reverse osmosis we will do it lower से higher की तरफ भेजते हैं उसे, higher से lower की तरफ. ओडेंटोलॉजी, टीथ एंड गम की स्टडी को जब हम बोलते हैं ओडेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ टीथ एंड गम इज नोन एज द ओडेंटोलॉजी. ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टो is related with bones and logy means study. The study of bones is known as the osteology. Oncology, study of cancer and tumors is known as the oncology. Obstetrics, pregnant women
से रिलेटेड जो भी साइंस होती है दैट इज नॉन एज द obstetrics. Ornithology, the study of bird is known as ornithology. Now we are talking about orthopedics, diagnostic and repair disorder of locomotive system. Phytoplankton, microscopic organism which passively float on the surface of the water. Parasite, organism which depend upon other living organism for their food and shelter. That is known as a parasite. Poikilothermic, which change their body temperature according to the surrounding, is also known as a cold-blooded animals. Poikilothermic. Poikilothermic. Pigment, a substance which absorbs light certain wavelength like chlorophyll found in the green leaves. Paleontology, study of fossil, is known as the paleontology. Physiology, different structure of organ is known as the physiology. Pathology, study of pathos, जो कि डिसीजेस फैलाते हैं उनको बोलते हैं हम पैथोलॉजी. पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट इज नोन एज अ पोमोलॉजी. साइकेट्री, मेडिकल मेंटल डिसऑर्डर को हम जब ट्रीट करते हैं तो उसे बोलते हैं साइकेट्री. साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर. व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर इज नोन एज अ psychology. Pisciculture, rearing of fishes. Rearing of fishes is known as a pisciculture. Phycology, study of algae is known as the phycology. Study of algae. Pediatrics, branch of medicine dealing with children, is known as the pediatrics. Parasitology, study of parasite. Study of parasite is known as a parasitology. Pharmacology, the science which deal with drugs, is known as the pharmacology. Photobiology, effect of light on the various biological processes known as the photobiology. Phylogeny, evolutionary history of organism. Physiotherapy, treatment of body defect through massage and exercise. Radiology, in the radiology we will study the effect of radiation on living being, that what will be the impact of the radiation on the human being, that come under the radiology. और रेडिएशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? जैसे consider there was any nuclear power plant and if there was a disaster, for example at Chernobyl, in Fukushima, as well as in Russia. So when there was a disaster, when there was a explosion in the power plant, there was the first danger which we will consider, that is the spread of the radiation, which has a negative impact on our जो हमारा जेनेटिक सिस्टम है उसके ऊपर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसको हम स्टडी करते हैं रेडियोलॉजी के अंदर. रिनोलॉजी, द स्टडी ऑफ नोज एंड olfactory organs is known as a rhinology. Sonography, the study of ultrasound imaging is known as sonography. Sorology, study of lizard is known as the sorology. Serology, the study of serum, interaction of antigen and antibiotics in the blood is known as the serology. Symptomology, study of pulses and arterial pressure. Taxonomy, study of classification, nomenclature and identification of organism. Telepathy, communication of thoughts or ideas from one mind to another without normal use of senses. In other words, this is the process of mental contact. Veterinary science, science of healthcare and treatment of domestic animals. Veterinary science, science of healthcare and treatment of domestic animals, that is known as the veterinary science. I hope ये आपको अच्छा लगा होगा. So please share it on Facebook. अगर आप इसे Facebook पे शेयर करेंगे तो I will be really very helpful for you. If you will like our content, we need the financial support. तो आप यहाँ पे अजय कुमार उसमें अजय रोर @SBI मेरा UPI ID है, उसकी डिटेल आपको you will get the same detail in the description also. So I will request to you, please support us financially also, and please share our content on the Facebook, and please give your suggestions that how we can improve our content so that you will be more satisfied with service provided by us. Thank you very much and have a nice day. Have a good day. Have a good luck.
थैंक यू।